Hello everyone, welcome back for the revision of chapter number 4 of your Capital Market and Securities Law subject. I am C.S. Anupma Pandey here with the series of revision lectures for your December 2025 examinations. I hope you all have gone through the complete revision of chapter number 1, 2 and 3 already being uploaded on this channel. As you can see, I have prepared a very student-friendly and summarized notes for you all. You may pin me on the number visible on the screen for the notes and for any other assistance regarding the exams. I will be there to provide you with the same. So let's get started with our first topic, that is regulatory framework. So in this chapter, we are basically going to study about two regulations, that is Securities and Exchange Board of India Act 1992 and SEBI Informal Guidance Scheme 2003. So our first introductory topic is Introduction and Establishment of SEBI. So the establishment of SEBI was set up on 12th April 1992. It was set up on 12th April 1992 under the SEBI Act. It has the purpose of regulating the securities market after the 1991 reforms which were brought in. So what all are the brief features of SEBI? It is a body corporate. It has perpetual succession. It has a common seal. It can acquire, hold, dispose of property, either movable or immovable. It has its head office in Mumbai. It can open other offices anywhere in India as well. So what all are the primary objectives of SEBI are? We have already studied the same in previous chapters as well, which is to protect the investors' interest, regulate the securities market, and further promoting the development of securities market. Our topic number 2 is management and composition. So what is the composition of your SEBI? So SEBI is governed by a board. You can recall it as C2R5 rule. So C as in chairman, 2 officials from Ministry of Central Government. R is 1 member from the RBI and 5 other members, of whom at least 3 should be whole-time members appointed by the central government. Members are chosen based on their ability, integrity, and experience in law, finance, economics, administration, accountancy, or other useful disciplines. Okay. Chairman has general superintendence and may exercise all board powers as well. Our third topic is functions and powers of SEBI. So, Section 11 deals with the duty of SEBI. The duty is to protect investors' interests and promote and regulate the securities market by measures SEBI thinks fit. We have already studied this in the objectives of SEBI. You can write the same in the duty of SEBI as well. Key measures and powers under Section 11, subsection 2 are regulate the business of stock exchange and other securities market, register and regulate intermediaries, for example, stockbrokers, sub-brokers, share transfer agents, bankers to an issue, trustees, registrars, merchant bankers, credit rating agencies, underwriters, portfolio managers, investment advisors, etc. Registers and regulates depositories, participants, custodians, financial institutions, credit rating agencies, etc. Register and regulate venture capital funds, collective investment schemes, promote and regulate self-regulatory organizations, prohibits fraudulent and unfair trade practices, promotes investor education, and also trains intermediaries, prohibits insider trading, regulates substantial acquisition of shares and takeover, calls for information and inspects, conduct inquiries and audits of exchanges, mutual funds, intermediaries, SROs,
etc. Calls for information from banks, authorities, other Indian or foreign regulators relevant for the investigation, levies fees, charges, and conducts research. So here are few basic points regarding the registration of various intermediaries, few points regarding the regulation of insider trading, substantial acquisition of and takeover codes, and various other points regarding the inspection and audit. Inspection powers. SEBI may inspect books, registers, documents of listed companies, public companies, where it is reasonably believes insider trading or fraudulent practices has been occurred. Civil powers. SEBI is vested with powers of civil code under the CPC 1908 for discovery and production of books and documents, summoning and examining the person on oath, inspection of books, registers, documents of intermediaries, inspection of listed, to be listed public companies, issuing commissions for witness, documents, examination, etc. So these are the 5 basic powers of SEBI, which is quite important from the exam point of view. Interim orders which can be passed by the SEBI are: SEBI can issue orders with reasons recorded in writing, which include suspending the trading of any security, restrain persons from accessing the market and prohibit trading, suspend stock exchange or SRO's office bearers, impound and retain proceeds, securities under the investigation, attach bank accounts, property, maximum for a period of 90 days, must get confirmation from special court under section 26A. Attachment continues till case ends. Direct intermediaries, persons not to dispose of or alienate assets under the investigation. So this is very basic principle of natural justice to be given. Hearing opportunity must be given to the concerned persons. Power to regulate prospectus and collective investment schemes. SEBI can prohibit or regulate issue of prospectus or call for information on collective investment schemes having corpus of more than 100 crore. Unregistered pooling may be deemed as collective investment scheme. तो जो एज अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रजिस्टर्ड नहीं भी है पर उनका कॉर्पस अगर मोर देन 100 करोड़ का जा रहा है तो दे शैल बी कंसिडर्ड एज द डीम कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बाय द सेबी. Power to issue directions and disgorgement. SEBI can direct persons to disgorge wrongful gains. Order includes power to disgorge profits or avert loss. Investigation by SEBI under section 11C. इसका स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे प्रोसीजर लिखा हुआ है. तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ग्राउंड फॉर इन्वेस्टिगेशन आपको पता होना चाहिए कि इफ सेबी बिलीव्स दैट ट्रांजैक्शन वाज हार्मफुल टू द इन्वेस्टर्स मार्केट or was in violation of SEBI Act, rules, regulations, direction, etc., then SEBI may order investigation. Duty to produce records. Further, किसको प्रोड्यूस करना है रिकॉर्ड्स? मैनेजर्स, एमडी, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज, इंटरमीडिएट्स, मार्केट पर्संस एक्सेट्रा. ड्यूटी इनकी क्या है? प्रिजर्व प्लस प्रोड्यूस ऑल बुक्स, रजिस्टर्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स टू द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी. पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी क्या होनी चाहिए? They can demand information, books, registers, documents if relevant for investigation. Custody of records. Authority can keep the records for 6 months, then must return. Certified copies must be given if requested. They can recall records again if needed. Examination on oath. They can examine managers, MDs, officers, intermediaries on oath. Personal appearances may be required. Failure in compliance. अगर failure होता है compliances का, अगर कोई इन्होंने information present नहीं किया, they didn't appear on summon, and उन्होंने they did not produce to the investigating authority or any person the books, registers, other documents, records which was their duty to produce. तो यहाँ पे उनको क्या क्या पनिशमेंट दी जा सकती है? इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 year और फाइन विच मे एक्सटेंड टू 1 crore rupees or with both, and
also with a further fine which may extend to 5 lakh rupees for every day after the first during which the failure or refusal continues. So the penalty is quite high in these cases. Notes of examination taken in writing, read over and signed, usable as evidence. Seizure of records. If records may be destroyed, altered, falsified, authority can apply to designated court. Police, central government help can be requisitioned. Court order authorizing seizure. Court may allow authority to enter places where records are kept, search such places, seize necessary records. Exemption क्या है इसका? No seizure of listed and public companies unless insider trading and market manipulation is involved. Returning of records. Authority must return the records after investigation. They can mark the identification signs before returning. They must inform the same to the courts. Search and seizure procedure. They must follow CRPC 1973 provisions for that matter. So आपको कैसे याद रखना है कि सबसे पहले ग्राउंड होना चाहिए, फिर वहां पे रिकॉर्ड्स का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, उन रिकॉर्ड्स को ये अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेट करेंगी, उन रिकॉर्ड्स को फिर ये कस्टडी में ले सकती हैं। रिकॉर्ड्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तो वो पर्सन्स को बुला के उनको एग्जामाइन कर सकते हैं ऑन ओथ। यहाँ पे फेलियर वाला पॉइंट आप लास्ट में लिख सकते हो। जब ओथ में उनको आप एग्जामाइन कर लोगे उसके बाद नोट्स ऑफ एग्जामिनेशन आप लिख सकते हो। फिर जो भी आपके पास रिकॉर्ड्स थे उनको आप सीज कर सकते हो। कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए सीजर के लिए। रिटर्न करना है फिर आपको जब आपका इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया है। देन सर्च एंड सीजर प्रोसीजर आपको इफ नीडेड यू कैन फॉलो एज पर सीआरपीसी। एंड लास्ट में आप नॉन कंप्लायंस का प्रोविजन लिख सकते हैं that what all are the penal provisions for non-compliances under the investigation procedure by SEBI. Cease and desist proceedings, Section 11D. Powers given to the SEBI, wherein SEBI can, after conducting an inquiry, order any person who has violated or is likely to violate the Act, rules, regulation to cease and desist from committing or causing such violation. So this is preventive in nature. Scope क्या है इसका? This is preventive in nature. SEBI acts not only when a violation has happened, but also when there is a likelihood of violation. उस केस में सीज एंड डिसिस्ट प्रोसीडिंग्स आ जाती हैं। एक्सेप्शन क्या है इसका? SEBI कैन नॉट पास सच ऑर्डर अगेंस्ट a listed company, listed public company, or a public company intending to list its securities, unless SEBI has reasonable grounds to believe the company has engaged in insider trading or market manipulation. Our fifth topic is registration of intermediaries and prohibition of certain activities. So, regarding the registration provision, registration is mandatory for intermediaries like stockbrokers, sub-brokers, share transfer agents, bankers to an issue, trustees of trustee, registrar to an issue, merchant banker, underwriter, portfolio managers, investment advisors, depository participants, custodians, FIIs, CRAs, and other notified intermediaries. So this is also important from your practical point of view because these are some of the SEBI registered intermediaries. ये सारे इन्वॉल्व होते हैं डे टू डे वर्किंग ऑफ दी स्टॉक मार्केट्स। तो यहाँ पे इफ यू वांट टू परस्यू आर्टिकलशिप एज वेल, there are various these intermediaries under whom you can undergo your articleship. For example, credit rating agencies, डिबेंचर ट्रस्टीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जिनके अंडर आप ट्रेनिंग कर सकते हो। मर्चेंट बैंकर्स, देयर आर वेरियस मर्चेंट बैंकर्स इन मुंबई per se. So further also requires SEBI registration। और किसको किसको जरूरत है? वेंचर कैपिटल फंड्स को, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को, म्यूचुअल फंड्स को, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को, बिजनेस ट्रस्ट एक्सेट्रा। क्लैरिफिकेशन क्या है यहाँ पे? CIS and mutual funds do not include ULIPs or insurance linked products. Application as per SEBI regulations and fees is needed. Suspension and cancellation of registration. SEBI can suspend or cancel the registration after giving reasonable opportunity of being heard. SEBI can suspend or cancel registration after hearing OBH. We have already studied. Prohibited activities क्या क्या है? Post registration, use of manipulative and deceptive devices, schemes, artifices to defraud, fraudulent practices in issue dealings of securities. Insider trading is not at all
allowed dealings and communicating while in possession of UPSI unpublished price sensitive information, acquiring control or shares beyond prescribed limit without compliance with the takeover regulations are some of the activities which are prohibited by the SEBI. Penalties and adjudication. Adjudication under Section 15I, SEBI appoints an adjudicating officer who conducts the inquiry, gives hearing, may impose penalty under the specified sections. SEBI can call for records, and if adjudicating officer order is erroneous, enhance the penalty after giving hearing opportunity. फैक्टर्स फॉर क्वांटम ऑफ पेनल्टी, क्या क्या फैक्टर्स के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि पेनल्टी का क्वांटम कितना होना चाहिए? तो एजुडिकेटिंग ऑफिसर एंड सेबी मस्ट कंसीडर डिसप्रपोर्शनेट गेन, अनफेयर एडवांटेज कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है इन्वेस्टर्स एंड अदर ग्रुप्स को, रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट, क्या ये डिफॉल्ट जो भी हुआ है वो रिपीटेटिव नेचर का है या वन टाइम है. सो दीज आर illustrative, not exhaustive. Adjudicating officers may consider other factors as well. Supreme Court confirmed this in भावेश बापरी केस में. ये डिसाइड हुआ था कि ये जो फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, दिस इज नॉट exhaustive, this is illustrative in nature. SEBI can consider other factors as well for deciding on the quantum of penalty to be imposed. पेनल्टी अमाउंट्स यहाँ पे क्या क्या है? सो सी देर आर वेरियस सेक्शंस फॉर द पेनल्टीज इन योर मॉड्यूल स्टार्टिंग विथ 15A to 15H, which is quite similar in nature with respect to the amount of penalty, but the reasons of non-compliance are different, so you can just go through that in your module. Here you can see 15A to 15H. Penalty is quite the same for various offenses, particulars given in here. So you can just give it a read, and what I have considered is important from the exam point of view, I have covered in the notes. So which is section 15F, stock brokers related non-compliance. So default and penalties, default के लिए penalties क्या है? At least 1 lakh up to at least 1 lakh to 1 crore. Specific penalties for late delivery, payment and excess brokerage may be higher. Section 15G, insider trading related non-compliance, at least 10 lakh to 25 crore or 3 times of profits made, whichever is higher. 15H, non-disclosure of acquisitions and takeovers, at least 10 lakh to 25 crore or 3 times of profit. Section 15HJ, fraudulent and unfair trade practices, at least 5 lakh to 25 crore or 3 times of profit. Section 15HAA, alteration, destruction of records, failure to secure SEBI database, at least 1 lakh to 10 crore of fine or 3 times of profit. Section 15HB, contravention with no separate penalty, 1 lakh to 1 crore. Okay. So these are few of the penalty provisions you can go through from the exam point of view and give it a read to the other penal provisions for your knowledge purpose from the module. Just keep in mind herein the penalty provision, you can just write whichever is higher for these sections as well. Whichever is higher, okay? Adjudication, as per section 15I, purpose क्या है? SEBI can impose penalties for violations of securities law through an adjudication process. Adjudicating officer, an officer of SEBI, conducts the inquiry. Powers क्या क्या होते हैं उनके? To summon and examine any person or documents relevant to the case, impose penalties if the provisions are violated. SEBI का उन पे क्या oversight होता है? SEBI can review the adjudicating officer's order. If the order is found insufficient and not in the interest of the securities market, SEBI may enhance the penalty. The person must be given the opportunity of being heard before the enhancement. Time limit क्या होती है? SEBI cannot pass an order enhancing the penalty after 3 months from the adjudicating officer's order or the disposal of the appeal under section 15T, whichever is earlier. So this is the provision regarding the adjudication of the order passed by the adjudicating officer and further by the SEBI.
Factors we have read above as well. While deciding the penalty, following factors must be considered: disproportionate gain, unfair advantage made due to the default, loss caused to the investors due to default, repetitive nature of default. Section 15JA says all the penalties collected under this act are credited to the Consolidated Fund of India. ये आपको याद रखना है. CFI के अंदर आपका ये सारा पेनल्टी का अमाउंट कलेक्ट होता है, क्रेडिट होता है. Topic number 7 is settlement mechanism. Who can apply for the settlement? Any person against whom proceedings have been initiated or may be initiated under the sections 11, 11B, 11D, 12(3), 15I can apply for settlement with SEBI. SEBI's approach क्या रहेगा इसमें? They can consider the nature, gravity, impact of default. They may accept the settlement on payment and other terms as per the rules and regulations. Settlement procedure regulated by the SEBI regulations. No appeal against the settlement order is allowed. Settlement amounts except disgorgement and legal costs are credited to the Consolidated Fund of India. इसका एक एग्जाम्पल है, ये आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, जिसमें जेएम फाइनेंशियल्स ने अप्लाई किया था सेटलमेंट के लिए. You can go through the example once. Recovery of amounts. अब पेनल्टी तो लेवी हो गई है, अब उनकी रिकवरी भी करनी है सेबी को एंड एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स को, तो वो कैसे होगा? Let's move ahead with the topic. When recovery officer acts, if penalty not paid, directions for refund, disgorgement not complied with, or fees unpaid, recovery officer prepares a certificate of amount due. A certificate is prepared. Modes of recovery क्या क्या है? Attachment and sale of movable and immovable property, attachment of bank accounts, arrest and detention, appoints receiver for assets. Recovery officer may seek local administration help. Recovery for SEBI directions has precedence over other claims. Liability on death. Legal representative may be continued against for disgorgement, refund, recovery. Personal liability limited to the estate's capacity. Special rules for transfers to spouse, minor child to defeat recovery may be applied for. सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल का यहाँ पे प्रोविजन है. नेक्स्ट हमारा स्टैब्लिशमेंट एंड कॉम्पोजिशन, इसका हमको पढ़ना है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको स्टैब्लिश किया था. इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं प्लस जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स होते हैं बेंचेस में. बेंचेस ऑर्डिनरली सिट एट मुंबई. ईच बेंच मस्ट हैव एटलीस्ट 1 जुडिशियल प्लस 1 टेक्निकल मेंबर. प्रोसीजर कैसा होता है इनका? मेमोरेंडम ऑफ अपील मस्ट बी फाइल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. Appeal to SED within 45 days from the order of SEBI and adjudicating officer. Appeal to Supreme Court further within 60 days from the order of SED's order, with possible extension up to 60 more days. Powers of SED क्या होते हैं? Same as of SEBI, which is of civil court's power to summon the witness, require production of documents, receiving affidavits on evidence, issuing commission, reviewing decisions, dismiss for defaults, dismiss orders for default, etc. Sets for proceedings are judicial proceedings. Representation. Appellant may appear personally or authorize CA, CS, CMA, advocate or officer to present the case. Bar on civil courts. No civil court can entertain a suit on matters that adjudicating officer or SED can determine. No injunction against the SEBI's action. Offense, special court and corporate liability. Offense सेक्शन 24 में आपका डिफाइन किया हुआ है. कॉन्ट्रावेंशन, अटेम्प्ट, अबेटमेंट, जिसमें इम्प्रिजमेंट अप टू 10 years और फाइन अप टू 25 crore और both are provided for. Non-payment of penalty, direction, compliance can also attract imprisonment exceeding 1 month to 10 years and fine. Special courts. Central government may establish special courts for speedy trial. Judge must be sessions judge, additional sessions judge. Cognizance of offense only on SEBI's complaints is allowed in case of special courts. Contravention by SEBI, section 27 says, company plus person in charge, example director, manager, secretary,
deemed guilty unless they prove contravention committed without their knowledge or they exercise due diligence to prevent it. In case of companies, ये प्रोविजन है आपके नॉन कंप्लायंस का कि अगर होता है कंपनी से या आपके पर्सन इंचार्ज से, तो they shall be liable until and unless they prove the contravention was committed without their knowledge or they had exercised the proper due diligence to prevent the non-compliance happened. Our 11th point is scores investor grievance portal. So this is a very important topic from your exam point of view as well as for your practical knowledge as well. So in case you do your articleship from a listed company, you will get to know the and handle the work relating to the scores, which is basically for the investor grievance redressal. So SEBI complaints redressal system centralized web platform है ये एक for investors to lodge their complaints against the listed companies, registered intermediaries, etc. तो जिसमें इन्वेस्टर अपनी कंप्लेंट्स को लॉन्च कर सकता है जाके अगेंस्ट द कंपनी. स्कोर्स 2.0 एंड टाइमलाइंस चेंज. फर्दर बाद में स्कोर्स 2.0 आया था. क्यों आया था? न्यू वर्जन आया था on 1st of April 2024. Investors must use SEBI scores website to lodge their complaints. New rules में क्या था? Entities must upload action taken report within 21 calendar days of receipt. Auto routing and auto escalation is provided in case of SEBI 2.0 scores platform, wherein there are some designated bodies to monitor the redressal. ये समझ में नहीं आया होगा. For that matter, I have provided you a tabular format of the entire topic, जिसमें आपको समझ में आएगा कि what it is. So introduction इसका क्या है कि SEBI scores एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन्वेस्टर्स अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं अगेंस्ट द लिस्टेड कंपनी, अदर SEBI रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस. ऑब्जेक्टिव क्या है? एफिशिएंट ग्रीवेंस रिड्रेसल, ट्रांसपेरेंसी, स्पीड, ऑटो राउटिंग एंड ऑटो एस्केलेशन ऑफ द कंप्लेंट्स. यहाँ पे उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, कौन सा रेगुलेशन के तहत वो आया था. इन्वेस्टर को कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए स्कोर्स पे रजिस्टर होना जरूरी है, जिसको जहाँ पे वो इस लिंक के थ्रू जाके रजिस्टर हो सकता है. कंप्लेंट आपको लॉन्च करनी है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन. जो भी आपका रीजन है रिगार्डिंग डिविडेंड, इंटरेस्ट, किसी भी रीजन से अगर आपको कंप्लेंट लॉन्च करनी है तो नॉन कंप्लायंस से 1 ईयर के अंदर और कॉज ऑफ एक्शन से 1 ईयर के अंदर आपको वो लॉन्च कर देनी है. एंटिटी, listed entity or registered intermediaries may have to submit their action taken report within 21 calendar days. सपोज इन्वेस्टर ने अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर दी, उसके बाद सपोज अगर कंपनी के अगेंस्ट की है तो कंपनी या अदर किसी ब्रोकर या इंटरमीडियरी के अगेंस्ट की है तो उनको विद इन 21 डेज के अंदर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करना है स्कोर्स पे जाके, जो कि ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगा कंप्लेनेंट प्लस डेजिग्नेटेड बॉडी को. डेजिग्नेटेड बॉडी क्या है? एक सेबी की ही ऑथराइज्ड बॉडी है which will look after the if the company and the other intermediaries are properly looking after the complaints and disposing the complaints or not. Okay, so once they have uploaded the action taken report, first review होगा जिसमें designated body review करेगी action taken report को. Complainant can also request review within 15 days once the ATR is submitted by the company or the intermediary. उसके बाद भी अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो रिवाइज्ड ATR सबमिट करना पड़ेगा कंपनी को विद इन 10 days फ्रॉम द रिव्यू रिक्वेस्ट. डेजिग्नेटेड बॉडी में से क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द एंटिटी ऑन दैट. फिर एक सेकेंड रिव्यू होगा जिसमें सेबी रिव्यूज द कंप्लेंट. इफ ATR इज नॉट सेटिस्फैक्टरी और ATR नॉट सबमिटेड टाइमली, कंप्लेंट तभी क्लोज होगा जब सेबी उसको डिस्पोज करेगी. तो याद रखना कि सबसे पहले केस लॉन्च होगा, ATR विद इन 21 डेज, फिर उसके बाद फर्स्ट रिव्यू होगा बाय डेजिग्नेटेड पर्सन, उसके बाद सेकेंड रिव्यू होगा बाय सेबी. नॉन रिड्रेसल के लिए पेनल्टी का प्रोविजन है यहाँ पे. अगर आप नहीं रिड्रेस कर पाए विद इन स्पेसिफाइड टाइम, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज फाइन इम्पोज करेगी 1000 पर डे पर कंप्लेंट का. एस्केलेशन टू प्रमोटर्स इफ अनरिजॉल्व, अगर आपका कंप्लेंट अनरिजॉल्व है और बहुत क्रूशियल है तो प्रमोटर को भी एस्केलेट हो सकता है. डीमेट अकाउंट फ्रीज होने की पॉसिबिलिटी है.
एलिजिबल कंप्लेंट टाइप्स क्या है? अब हर चीज के लिए इन्वेस्टर कंप्लेन नहीं कर सकता है, बिकॉज कंपनीज का भी इंटरेस्ट सेबी को देखना पड़ेगा कि किसी भी अनरीजनेबल रीजंस की वजह से वो कंप्लेंट तो लॉन्च नहीं कर रहे हैं। तो दे हैव आल्सो प्रोवाइडेड अ वेरी लार्ज लिस्ट ऑफ द रीजंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज जिसके बेसिस पे आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो। आपके मॉड्यूल में ये पूरा डिफाइंड है, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, नॉन रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड के रिगार्डिंग है तो आप कर सकते हो कंप्लेंट। नॉन रिसीट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, रिडेम्पशन प्रोसीड्स आपको नहीं मिले हैं, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स का अगर आपका इशू है, देन यू कैन लॉन्च द कंप्लेंट्स। नॉन रिसीट ऑफ राइट इशू, नॉन रिसीट ऑफ फ्रैक्शनल इंटाइटलमेंट्स, टीमैट एंड रीमैट का इशू है, तो इन केसेस में आप सेबी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो ऑन स्कोर्स। एक्सक्लूजन्स क्या क्या है? कंप्लेंट्स नॉट कवर्ड, अनलिस्टेड एंड डीलिस्टेड कंपनीज का नहीं है यहाँ पे कवर्ड। कोर्ट एंड क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जुरिस्डिक्शन ऑफ आरबीआई, आईआरडीआई, पीएफआरडीआई, सीसीआई, जहाँ पे भी इनका जुरिस्डिक्शन है उनके कंप्लेंट्स आप यहाँ पे लॉन्च नहीं कर सकते हो। एस्केलेशन ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पे? इन्वेस्टर्स कैन अप्रोच टू ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ओडीआर और कोर्ट्स एट एनी स्टेज। जब भी उन्हें अपना कंप्लेंट लॉन्च कर दिया लेकिन बीच में उनको लगता है कि नहीं हो पा रहा है, तो वो बीच में ओडीआर सिस्टम भी ऑप्ट कर सकते हैं एंड कोर्ट्स के थ्रू भी अपना केस ले कंप्लेंट लेके जा सकते हैं। कंप्लेंट अगर वो ओडीआर ऑप्ट कर लेते हैं या फिर कोर्ट के थ्रू जाना डिसाइड करते हैं, तो उनका कोर्ट्स पे जो भी कंप्लेंट रहेगा वो ऑटोमेटिकली डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। आपका फिर कंप्लेंट यहाँ ऑनलाइन ओडीआर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के अंदर फिर डिस्पोजल का प्रोसीडिंग्स वहां पे शुरू होएगा कोर्ट्स पे। फिर यू कांट क्लेम योर कंप्लेंट टू गेट रिजॉल्व। स्कोर्स 2.0 का मोबाइल ऐप भी आ चुका है फॉर योर iPhones and Android. The next topic is SEBI Informal Guidance Scheme 2003. तो बेसिकली सेबी इनफॉर्मल गाइडेंस स्कीम क्या है कि जिसमें कंपनीज क्या करती हैं, सेबी को कुछ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉस से रिलेटेड उनको कुछ इश्यूज होते हैं, तो वो उनको पूछती हैं, दे आस्क क्वेरीज रिगार्डिंग द सेम एंड सेबी उनको रिवर्ट करती है। ओके, सो पर्पस क्या है? इट अलाउज मार्केट पार्टिसिपेंट टू सीक इनफॉर्मल रिटन गाइडेंस फ्रॉम सेबी डिपार्टमेंट इन टू फॉर्म्स। एक होता है नो एक्शन लेटर्स, जिसमें डिपार्टमेंट इंडिकेट्स it would or would not recommend enforcement action if described transaction is carried out. So this is issued by the departments. And interpretive letter क्या होता है? They interpret specific provision in factual context. जो भी interpretation मांगा गया है कंपनीज के द्वारा या अदर इंटरमीडिएट्स ने मांगा है, वो उसका इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड करती हैं। हु कैन अप्लाई? रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट्स, लिस्टेड कंपनीज, कंपनीज इंटेंडिंग टू गेट लिस्टेड, म्यूचुअल फंड्स, एएमसीज, एक्वायरर्स अंडर द टेक ओवर रजिस्ट्रेशंस एक्सेट्रा। प्रोसीजर एंड टाइम क्या है इसका? रिक्वेस्ट मस्ट स्टेट फैक्ट्स, एप्लीकेबल लॉ, they must pay prescribed fees for the guidance. SEBI aims to dispose the same within 16 days, may hold hearing. Replies are departmental views, not binding orders, and may be kept confidential up to 90 days on request. SEBI may refuse to respond to hypothetical and vague interpretations asked for. Sub judice matters where enforcement action already initiated or policy concerns exist. सो मैं आपको दिखा देती हूँ, सेबी का वेबसाइट है ये। यहाँ पे अगर आप जाओगे, लीगल के अंदर सारे आपके एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, जनरल ऑर्डर्स हो जाते हैं। इन्फोर्समेंट के अंदर यहाँ पे जाओगे आप, तो इनफॉर्मल गाइडेंस आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे यू कैन सी बहुत सारी कंपनीज ने यहाँ पे सेबी से कुछ इंटरप्रिटेशन मांगा है, इनफॉर्मल गाइडेंस मांगी हुई है, तो सेबी ने उनको वो प्रोवाइड किया हुआ है। If you can just click on any of them. तो यहाँ पे एप्लीकेंट का लेटर है, उसने क्या पूछा था एंड सेबी ने क्या प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो आप ओपन करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ये आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी काम आएगा। दिस हैज बीन इशूड बाय द सेबी एंड दिस इज व्हाट आस्क्ड बाय द एप्लीकेंट। ठीक है, मूविंग अहेड। यहाँ पे कुछ केस लॉस थे जो अपने मॉड्यूल के ही थे, उसका मैंने यहाँ पे छोटा सा ब्रीफ दे दिया है, तो you can just give it a read for your clarification.
on the case laws as well. So thank you and all the best. Stay hydrated and stay confident for your exams. And you can just pin me on the number visible for the notes and any other queries you have regarding the chapter or for any topics. Thank you.